Hello students, we are here on chapter 3. Chapter 3 is factors that affect climate. हमारे देश में या कहीं पर भी अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग प्रांत के अलग अलग क्लाइमेट होते हैं, कहीं पर ठंड होता है, कहीं पे गर्मी होती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को इन जो बेसिकली क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। The weather keeps on changing every day. Some days are bright and sunny and hot, whereas some days are cloudy, rainy, or cold. The temperature, rainfall, pressure, and the condition of the atmosphere of a particular place over a short period of time is known as weather. The study of weather conditions is known as meteorology. And the kind of weather that a place has over a long period of time is known as climate. So basically इस पोर्शन में आपने ये समझा कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। जिस जगह पे बहुत सारा रेन होता है थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ गॉट अ वेट क्लाइमेट, और जहाँ पे रेन नहीं होता है जैसे कि राजस्थान में कुछ इस तरीके के एरियाज में, वहाँ पे सूखा होता है एंड वेयर देयर इज डेजर्ट्स। Then there are also various other factors, जैसे कि different parts of the world have different climate। जैसे सिर्फ हम अपने देश की बात ही नहीं, और बहुत सारे जैसे पूरे ब्रह्मांड में और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट होता है। अब वो क्या होता है हम पढ़ते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, द सन रेज हीट द surface of the earth. Look at the given diagram. So as you can see in the diagram, the sun rays are more direct on the perpendicular near the equator. Then the closer a place to the equator, the hotter its climate is. And now जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, हम सन से दूर चले जाते हैं, and the sun's rays are more slanting. So they do spread over a much larger area and have to travel a long distance, जिसकी वजह से गर्माइश उतनी नहीं होती है। तो अगर हम पोल्स की बात करें, जो अर्थ है उसके टिप पे देयर इज द पोल्स, तो वहाँ पे सन की किरणें नहीं पहुँचती हैं और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है। The place which is either closer to North Pole or South Pole has a colder climate. Then we have altitude. The climate of a place is also affected by its altitude. कितना ऊंचा है, सी लेवल से कितना ऊंचा है, उसके ऊपर बेस करता है वहाँ का क्लाइमेट और टेम्परेचर। Hill stations like Ooty, Mussoorie, etc. are cool even in summers. And अगर हम विदेशों की बात करें, Kilimanjaro in Tanzania is near to the equator but is still covered with snow because of its height. तो ये जो जगह है वो इक्वेटर के पास है, तो आइडियली वहाँ पे बहुत गर्मी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत ऊंचा है तो वहाँ पे स्नो होता है हमेशा। Then next factor is distance from the sea. जो जगह डिस्टेंस होगा सी से, दूर होगा या पास होगा, उसके लिए भी there are a lot of changes that happen in the climate. So what are these? Cool breeze coming from the sea affects the climate of any place. So places from the sea, far from the sea, do not get sea breezes, so they are extremely hot in summers and very cold in winters. This is called extreme climate. Now we are going to compare the climate of Delhi and Chennai. So Chennai is located along the coast while Delhi is located far away from the east sea coast. Chennai should be hotter than Delhi in the summer season, but then this is not so. It is not very hot in summer, neither very cold in winter. Why is that? क्योंकि चेन्नई जो है वो सी के करीब है, तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो भी प्लेसेस सी के करीब होंगे वहाँ पे क्योंकि सी ब्रीज है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना ही ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो सी से आने वाले, जो समुद्र से आने वाले जो हवाएं हैं वो उस जगह को कूल रखते हैं। Then the direction of the winds. Winds bring the weather of the place from where they come. Coming from region that are hot, तो जहाँ पे गर्म जगह से winds चली आ रही है तो उस wind में भी गर्माइश होगी, और वो जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे उस जगह को वो गर्म कर देते हैं। Delhi is hot in the summer due to dry and hot winds from Rajasthan. राजस्थान से आने वाली जो हवाएं हैं, जो गर्म हवाएं हैं, वो दिल्ली को समर्स में हॉट बना देते हैं। विंटर में कोल्ड विंड्स फ्रॉम हिमालयाज, हिमालय से जो ठंडक आती है उसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। Sometimes wind bring clouds with them and they cause rainfall as well. Then next is humidity and rainfall. Moisture or water vapor present in the air is known as humidity. Humid air also affects the climate of a place,
and it causes rainfall. The amount of rainfall and the season when it falls influence climate of that place. आगे हम पढ़ेंगे climate और heat zones. So, the earth can be divided into 3 climatic या फिर heat zones. क्या है ये heat zones? आइए देखते हैं. Torrid zone, temperate zone and frigid zone. So, the first is torrid zone. It lies on both sides of the equator and extends between the Tropic of Cancer and the north and Tropic of Capricorn in the south. It is also called the tropical zone. Then we have the temperate zone. The area lying between the torrid zone and the frigid zone in both hemispheres is called the temperate zone. Next is the third and the last one is frigid zone. This area lies between the Arctic Circle and the North Pole and Northern Hemisphere and between the Antarctic Circle and the South Pole. And because यहाँ पे बहुत सारा बर्फ होता है, so it is known as और बहुत ठंड होती है, it is known as the frigid zone. Next, let us study about global warming. Have you heard of global warming? क्या आप लोगों ने global warming के बारे में सुना है? Yes, it is warming near the Earth's surface, and this occurs when the sun's heat is trapped by the Earth's atmosphere. Atmosphere contains a mixture of gases, but when the excessive carbon, which is added to the atmosphere by burning of fuels by human beings, allow the sunlight to reach the Earth and warm its surface. This causes more of water to evaporate in the atmosphere. Water vapor, being good at absorbing heat, causes the Earth's atmosphere to become even more warmer. So this is basically known as global warming. So what are the few important points जो कि हमने इस chapter में पढ़ा? The weather keeps on changing every day. The study of weather condition is known as meteorology. The closer a place to the equator, the hotter is its climate. Then the climate of a place is affected by various things: its altitude, its climate, its moisture content, and a lot of other things. And then we have 3 zones, and torrid zone is also known as tropical zone. So students, I hope you enjoyed the chapter, had a great learning, and I will see you in the next chapter. Thank you so much.